Hello everyone. This is the episode number 6 for Behind the Ink. This is a special episode on a request of a very young author. He's 17 years old. His name is Koushik Agarwal. So we'll invite him now. So we'll wait for him to join and then we'll start. And it's very interesting to know or find out what a 17-year-old thinks in his writing process and so on. So it'll be a fun discussion to have. Let's see. Let's wait for a couple of minutes for him to join. So in the meanwhile, if you have chance, you can check my latest book, Letters to My Mother, available on Amazon. It's an epistolary. Yeah, he's joined now. Hi Koushik, join, share your screen, come online. Okay, we are just having some technical difficulties. Koushik, I'm accepting your request. Yeah, I am accepting your request, man. Just share your screen, no? I don't have any request. Okay. Okay, I am. Can you hear me? I have accepted this at least 10 times now. Yeah, hi. Us. Yeah, man, how are you? I'm all right. How are you? Good, good, good. So you finally got. I was accepting that. Yeah, I accepted almost 10 times. What was happening? Technical glitch होगा, I guess. Okay. So I can expect a lot of your school friends joining in today, no? I don't know. Let's see who is joining. Okay. I guess in my introduction I said I am inviting an author today who is 17 years old. Is that correct? Right, I'm 17. And you are in your 12th standard, I'm in 12th. and you have already published a book. So that's awesome, man. I mean, really inspirational to see young people doing so much. When I was when I was 17, I had zero idea of how to get published, how to start my own writing group, and so on. So you guys are way ahead of us when we at your age. Thank you. Thank you so much. So yourself, no? I mean, I know your friends have joined, and I know you personally as well, so I know about a bit about. But this recording or this video will be watched by other people as well. It'll go on your profile. So for those people who will bump into this video, what is your just tell us who you are. Okay, so my name is Koushik and I'm in class 12th currently. I'm 17. I'm from Odisha and my hobbies are reading, writing, and listening to Taylor Swift. Okay, let's I I believe in youth and I want that आज का जो youth generation है they should produce a lot more than it is expected. मतलब जितना projection है उससे ज़्यादा हम लोग को produce करना है आगे. मतलब क्या That's my क्या प्रोजेक्शन है? What do you think is the product projection? projection as in productivity. I am talking about human resource. जो हम लोग का HR है country का
लाइक जो प्रोजेक्शन इन द सेंस हर साल वी प्रोजेक्ट दैट इस एज ग्रुप से हमें इतना प्रोडक्टिविटी मिलेगा. सो हमारे एज ग्रुप से आई गेस देयर शुड बी मोर प्रोडक्टिविटी इन कमिंग टाइम्स. तो मतलब ऐसा कुछ सर्वे है कि इस जनरेशन से इतना प्रोडक्टिविटी मिला है, इस जनरेशन से इतना मिलना चाहिए, ऐसा कुछ सर्वे किया है किसी ने? नहीं, देयर इज नो सर्वे, बट हर एज ग्रुप का निकलता है ऐसे कि इस एज ग्रुप से इतना परसेंट कंट्रीब्यूशन हुआ है. ओके, तो यू सेड यू आर फ्रॉम उड़ीसा, नो? एंड सो अभी सब स्कूल्स खुल गए, राइट? कोविड के बाद स्कूल्स have opened, everything is done. So how do you get time to okay, tell us about your book first, no? Tell us about your book, like what is the book about, what it's called. Do you have a copy to show? Yes, I have a copy. Here it is. Yeah. So it's a non-fiction, right? It's a non-fiction book. So tell us. So the title of my book is The Theory of Life, and it's a non-fiction book. And जब मैंने ये लिखा तो मेरे माइंड में मेनली मेरे ही एज ग्रुप के रीडर्स थे, लाइक मेरे एज ग्रुप एज इन फ्रॉम 17 to 23. So the book is about the problems that a teenager or a नॉट ओनली अ टीन, मतलब जो भी बंदा अभी एक हमारे टीन के बाद भी हो सकता है, वो टीन के पहले भी हो सकता है, जो भी प्रॉब्लम्स नॉर्मली आज के टाइम पे फेस कर रहे हैं, लाइक वी ऑल आर नॉट टू मच ओपन टू आवर पेरेंट्स एंड ऑल, यू नो, लाइक सो वी नीड समवन जो हमें सॉल्यूशन दे. वी डू नॉट कन्फाइड इन टू एवरीवन. सो जैसे अगर मेरे पास कुछ प्रॉब्लम है, आई विल नॉट कम टू यू एंड से भाई मेरे प्रॉब्लम है तो सॉल्व कर दे. वी विल फाइंड सम एनोनिमस सोर्स ऑफ सॉल्यूशन. या तो कोई बंदा गूगल करेगा, कोई जाके ये मैक्सिमम बंदे गूगल ही करेंगे आई विल से, और जिनके दोस्त से दे विल आस्क देयर फ्रेंड्स. बट सो मेनली मेरे बुक में यही है कि हमारे एज ग्रुप के बंदों में क्या प्रॉब्लम फेस किया है लाइफ में और उनको कैसे रिएक्ट करना चाहिए. तो फॉर एग्जांपल क्या प्रॉब्लम फेस करते हो तुम्हारे जनरेशन के बंदे? ओके, सो मेन थिंग मेरे बुक का ये है, द टर्म द वॉल ऑफ इनर फियर्स. द वॉल ऑफ इनर फियर्स ये मेरा पहला टर्म था, मतलब मेरे दिमाग में जो आया व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग द बुक. सो इसका मतलब है अगर मुझे कुछ करना है पर मैं कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे आसपास के लोग क्या सोचेंगे या फिर मेरे पेरेंट्स कैसे रिएक्ट करेंगे, और इफ आई विल गेट इनफ वैलिडेशन फ्रॉम द एनवायरमेंट और नॉट. सो वी हैव टू ब्रेक दैट वॉल ऑफ इनर फियर्स. जैसे मुझे बुक लिखना था, सो आई रोट अ बुक even if it did not get a much of sales or a lot of readers, but I wrote it and I published it. So we have to break the wall of inner fears. That's my main thing. तो ये जो तुम्हारी बुक है, इसके अंदर तुमने प्रॉब्लम्स बताए हैं कि यंग एडल्ट्स को क्या प्रॉब्लम्स होते हैं और उसके क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, Right. Cause राइट? effect type है ये. ओके. एंड आई थिंक यू टोल्ड मी कि योर टीचर इंस्पायर्ड यू टू राइट दिस बुक. One of my old teachers, मतलब अभी नहीं, मेरे previous school के teacher थे, he inspired me to write a book. तो tell us more about that. वो कैसे स्पार्क कैसे आया? आई मीन हाउ डिड यू नो कि अभी मुझे किताब लिखनी है? तो 2 साल पहले आई वॉज इन रेसिडेंशियल स्कूल एंड आई वॉज इन टू बुक्स. मतलब मैं बुक्स में ही था, मतलब मेरा 10th बोर्ड्स था ना, आई एम इन 12th. तो तब 10th में भी बोर्ड्स के पहले भी मतलब मैं फिक्शन ही पढ़ रहा था. तब देयर वॉज दिस ऑथर नवनील चक्रवर्ती. आई वॉज एडिक्टेड टू हिज बुक्स. ही राइट्स रोमांस एंड तो पहले बुक से स्टार्ट हुआ, मतलब वो किससे स्टार्ट हुआ दैट इज नॉट वेरी मच इम्पोर्टेंट कि कैसे स्टार्ट हुआ. सो बुक से स्टार्ट होने के बाद आई, हाँ, देयर वाज अ पोएम कॉन्टेस्ट इन आवर स्कूल. सो दूसरों का पोएम्स पढ़ के आई थॉट व्हाई शुड नॉट आई गिव इट अ ट्राई. देन मैं रैंडमली एक राइमिंग पोएम लिख दिया, मतलब कुछ भी. द पोएम वाज जस्ट राइमिंग. आई बिलीव दैट खाली राइम करना चाहिए पोएम एंड वी कैन राइट एनीथिंग. सो उससे इट वाज वेरी ब्यूटीफुल आई गेस. एंड हाँ, फिर मेरे दोस्त ने मुझे इंसिस्ट किया, रूममेट्स थे मेरे, दे इंसिस्टेड मी टू कंटिन्यू राइटिंग. फिर पोएम से लिखते लिखते आई स्टार्टेड राइटिंग पोएम्स बैक 2 years बैक. देन अभी तक मैं पोएम्स अभी पब्लिश करता हूँ. देन आई चेंज टू एलन. मतलब मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में जब आया, आई वॉज इन साइंस लास्ट ईयर, तब आई डिड नॉट फोकस अ लॉट ऑन दिस राइटिंग फील्ड. उसके बाद आई शिफ्टेड टू कॉमर्स बिकॉज फिजिक्स ने मार दी थी, तो
I shifted to commerce. Then I had a lot of plenty of time. मतलब अभी मुझे लगा this is the time that I can write a book. Okay. So I So, okay, I think that's very interesting. At this age, you're able to define what you want and you create this product as well. So, ये जो book तुमने लिखी, the non-fiction book, right? तो yeah, yeah. इसका लिखने का क्या प्रोसेस था? लाइक हाउ मच टाइम डिड यू टेक? या फिर व्हाट ऑल इंस्पिरेशन यू गो फॉर? क्या रिसर्च किया इसके लिए? बिकॉज सी अभी क्या है ना, योर टॉपिक इज वेरी हैवी, है ना? यू आर गिविंग ज्ञान टू पीपल, नो ज्ञान अगर गलत ज्ञान दे दिया तो वो भी प्रॉब्लम है, राइट? तो वो कैसे मेक श्योर किया कि वो चीज सही है? कैसे इंस्पिरेशन कहाँ से लिया? या फिर व्हाट वाज योर राइटिंग स्टाइल? कितने टाइम में यू फिनिश द बुक? सो व्हाट वाज योर राइटिंग स्टाइल? तो basically इसमें 13 ठीक है. तो My question was, when someone young person like you watches this, then they can also take some tips and tricks कि कैसे लिखना चाहिए. If they have an idea कि मुझे किताब लिखनी है, but they are not able to write it, तो तुमसे वो आइडिया लेके, इंस्पिरेशन लेके, वो टिप्स एंड ट्रिक्स लेके, they can also write their book. right. So yeah, go on. So basically इसमें 13 articles है, and I will just name few of the articles. So there is an article called the purpose of life. उसमें मैं सिर्फ लाइफ के पर्पस पे ही आई हैव रिटन, एंड द सेकंड आर्टिकल इज व्हाट आर यू रनिंग अवे फ्रॉम. सो दीज आर नॉट लिंक्ड. मतलब मेरा ऐसा कोई फिक्शन बुक जैसा स्टोरी नहीं है ना कि मैं फ्लो में लिखूंगा तो ही होगा. सो आई रोट अ आर्टिकल ऑन मंडे, देन आई रोट द सेकंड आर्टिकल ऑन ट्यूसडे और वेंसडे. मतलब मेरा कोई टाइम फिक्स नहीं था. आई स्टार्टेड राइटिंग इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड आई फिनिश्ड इट ड्यूरिंग जुलाई, एंड बस 80 पेज का बुक है. सो आई टुक 7 months टू राइट ओनली 80 पेजेस. सो Okay. एक एक आर्टिकल लिखने में आई कंट्रीब्यूटेड ऑलमोस्ट 4 to 5 days. एंड फिर मैंने ग्रामरली यूज किया फॉर द ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, दैट इज वेरी बेसिक. और फॉर द इंस्पिरेशन आई यूज मीडियम. आई गेस यू नो मीडियम. मीडियम इज अ राइटिंग प्लेटफॉर्म एंड आई यूज मीडियम. लाइक सेम टॉपिक्स में और भी आर्टिकल्स है. So if you go through it, you can match your points with their points. Okay. If any other people agree to your points, then it is obviously valid. So I validated my points through other writers, and मेरे एक मौसा जी है, he is also a writer and he is a chartered accountant. So I cross checked with him the whole book before publishing. I cross checked with him. ओके, आई मीन क्या है ना, पहला जो टॉपिक बोला, पर्पस ऑफ लाइफ, अभी आई एम मोर देन डबल योर एज, मुझे भी समझ में नहीं आया पर्पस ऑफ लाइफ क्या है. So I have ordered your book, so I will go through it and I try to find out कि भाई if I can learn something from that कि purpose of life कैसे define करते हैं. So what was your editing process like? Like किसने edit किया किताब को, या तुमने Grammarly use करके खुद नहीं किया है? अरे सब कुछ मैंने खुद किया है. मतलब इसमें और कोई सेकंड पर्सन था नहीं वैसे. आई डिजाइन, आई चेंज द ग्रामेटिकल मिस्टेक, सब कुछ आई हैव डन इट ऑल. क्योंकि मैं बताता हूँ, एडिटर का जो पर्पस होता है वो केवल ग्रामर, पंचुएशन वो ठीक करना नहीं होता है. एडिटर का पर्पस ये भी होता है कि अगर आपने कुछ लिखा है तो आप उसको और डीप में कैसे लिख सकते हो, या फिर और कुछ उसमें कैसे ऐड कर सकते हो. सो जस्ट एज अ सजेशन, अभी तो खैर चैट जीपीटी आ गया है, तो यू डोंट नीड एन एक्चुअल एडिटर एनीवे. लेकिन ग्रामर के लिए, पंचुएशन के लिए, लेकिन एक ह्यूमन एडिटर की फिर भी एक स्पेशल स्पेशल जगह है जो कि अभी तक तो एआई नहीं ले सकता. सो मतलब आई वुड सजेस्ट कि व्हेन यू गो टू योर नेक्स्ट बुक, वेन एवर यू गो, ट्राई टू टेक एन एडिटर, बिकॉज वो एडिटर क्या करेगा, इट विल गिव यू अ पर्सपेक्टिव which is not known to you. राइट राइट. Okay. So what was your publishing process? Like, is it a self-published book, or what is your publishing process? मैंने सेल्फ पब्लिश ही किया है एंड आई डिड इट थ्रू नोशन प्रेस. सो इट्स pretty simple. मतलब नोशन प्रेस में ज्यादा कुछ करना नहीं है. You just have to upload your material and you have to name the book and the credits. That's it. अच्छा, कौशिक, तुम्हारा नेटवर्क थोड़ा सा वीक है तो वीडियो थोड़ा सा कट रहा है. अच्छा, यू वेंट थ्रू नोशन प्रेस. हाँ, I did it through नोशन प्रेस. तो नोशन प्रेस तो पेड सर्विस है, राइट? नहीं नहीं,
नहीं मतलब हाँ मैंने पेड सर्विस चूज किया है बट देयर आर टू सर्विसेज यू कैन आल्सो गो विद द फ्री वन. ओके ओके. तो ओके, पब्लिश करने के बाद steps which you took. क्या I चीज? couldn't, yeah. एक्चुअली खाली No, एक no, सेकंड नेटवर्क चेंज. Am I clear? it's okay now. It's okay. I can see you. Okay. तो जब किताब आपकी पब्लिश हो गई, जब किताब पब्लिश हो गई उसके बाद व्हाट वर द स्टेप्स व्हिच यू टुक टू रीच आउट टू फ्रेंड्स एंड फैमिली, या फिर मार्केटिंग में डिड यू डू एनीथिंग या फिर नहीं किया है? व्हाट हैपेंड आफ्टर द बुक रिलीज? मेनली मैंने अपना बुक प्रमोशन टीसीसी में ही किया है. उस ग्रुप में आप भी हो. आई प्रमोटेड इट देयर एंड देन आई उतना ही किया और सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ से ही हुआ है अपना. और कुछ बेसिक मतलब पेड मार्केटिंग मैंने कुछ किया नहीं है. इट इज ऑल वर्ड ऑफ माउथ. तो उस ग्रुप में आई थिंक द फर्स्ट मैसेज व्हिच आई सॉ, योर फर्स्ट मैसेज, यू सेड कि अभी मुझे केवल 3 किताबें करनी है, देन आई विल रीड 75 और समथिंग, ऐसा कुछ राइट. मैसेज था ना? तो डिड यू नहीं रीड? नहीं उसके पहले भी जैसे ही पब्लिश हुआ था बुक तब भी मैंने वहाँ मैसेज छोड़ा था. नहीं, पर अभी क्या काउंट चल रहा है? 75 हो गया? It is already crossed 80, I guess. It is now at 88. ओके. सो व्हाट विल गिव यू सेटिस्फैक्शन कि भाई मैंने कुछ लिखा और इतने लोगों ने पढ़ा? व्हाट इज दैट सेटिस्फैक्शन लेवल फॉर यू? मतलब 1000 बुक्स, 10,000 बुक्स, 100 बुक्स? Actually, number of books doesn't matter to me now. ओके. क्योंकि ये मेरा पहला बुक है फर्स्ट ऑफ ऑल. सो आई ऑब्वियसली इट इज नॉट कंपल्सरी कि लोग खरीदेंगे ही. कौशिक अग्रवाल कितने होंगे अभी मतलब दुनिया में? कौशिक जैसे कितने बंदे होंगे? ऐसी सेल्फ पब्लिशिंग इज नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस. मतलब अगर कोई भी बंदा चाहे तो वो कुछ भी लिख के अभी सेल्फ पब्लिश कर सकते हैं ना. करेक्ट. सो नंबर ऑफ बुक्स इज नॉट अ सेटिस्फैक्शन फॉर मी. बट मुझे जितना फीडबैक्स चाहिए था, जितने पॉजिटिव फीडबैक्स के एक्सपेक्टेशन थे उतने मुझे मिल चुके हैं. सो आई एम ऑलरेडी सेटिस्फाइड. बट सेटिस्फैक्शन खत्म नहीं होता है. यही बात है कि इट इज अ नेवर एंडिंग एलिमेंट. This is very important what you said कि मुझे positive feedback मिला है and I am happy with that feedback. I am motivated with that feedback. मेरे लिए वो feedback बहुत सही है. So क्या बोला लोगों ने आके तुम्हें? क्या बोला कि तुम्हारी किताब कैसी लगी या उससे कुछ सीखने को मिला? तुम्हारे जो यंग पर्सन एज ग्रुप के लोग हैं उन्होंने क्या बोला आके? दे बेसिकली सेड कि इसमें प्रॉब्लम को बहुत क्लियरली डिफाइन किया गया है. मतलब देयर इज नो डिफिकल्टी कि वो बंदा रिलेट नहीं कर पा रहा है. इफ आई समराइज इट इन वन वर्ड, सब कुछ रिलेटेबल था. अगर मेरे एज का कोई बंदा पढ़ेगा तो उसको रिलेटेबल लगेगा वो चीज. बट अगर कोई बड़ा एज ग्रुप या फिर कोई नीचे वाला बंदा पढ़ेगा तो उसको वो चीज रिलेट करने में टाइम लगेगा. ही वुड से कि ये क्या मतलब कोई कुछ भी मतलब लिख रहा है. दैट काइंड ऑफ मेरे थिंग. जैसा बूढ़ा आदमी पढ़ेगा तो उसे समझ में नहीं आएगा? नहीं समझ आएगा पर रिलेट करने में टाइम लगेगा. रिलेट करने में टाइम लगेगा. ओके. इट ऑल सो डिपेंड्स ऑन माइंडसेट. द लैंग्वेज ऑफ यंग पीपल इज डिफरेंट, ऐसा? राइट. ओके. इसलिए तो मैंने बुक क्लब भी अलग बनाया है. अभी क्या है, मैं आई एम मोर कीन टू रीड इट बिकॉज मुझे देखना है कि आजकल के यंग लोग कैसा सोचते हैं. तो आई वांट टू रीड दैट बुक. ये शुड ये जो बुक तुमने माय. बुक का book बनाया है इसके बारे में बताओ थोड़ा. क्या चीज? ये जो तुमने बुक क्लब बनाया है अभी, हाँ. टेल अस ओके. अबाउट दैट. तो जब मैं टीसीसी में ज्वाइन किया तो मुझे वहां में सबसे मेन चीज जो मुझे नोटिस करने मिला, देयर इज मतलब अगर वहां का हम लोग एवरेज एज निकालेंगे तो बंदा का 40 होगा. मतलब इफ वी टेक द एवरेज ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट्स वहाँ 40-45 तो होंगे ही. मतलब सब बड़े हैं. दैट आई मीन दैट सब बड़े लोग हैं वहाँ ना. ओके. तो आई नो लॉट ऑफ यंग रीडर्स एंड राइटर्स जिनको मतलब कोई कम्युनिटी नहीं मिलता है. मतलब उनके लिए कोई ग्रुप नहीं है. सो आई टॉक टू माई 5 to 7 फ्रेंड्स. नॉट थ्रू फ्रेंड्स बट मतलब जिनको मैं जानता हूँ सोशल मीडिया के थ्रू मिला हूँ. सो वी डिसाइडेड टू मेक अ कम्युनिटी फॉर यंग राइटर्स एंड रीडर्स. वो सेपरेटली मतलब वी विल स्टार्ट इट विथ यंग यंग एज ग्रुप्स एंड अगर और कोई ज्वाइन करना चाहे तो दे कैन ऑल्सो ज्वाइन. बट वी क्रिएटेड इट फॉर यंगस्टर्स. So we basically promote the work of youngsters there. अगर किसी मेरे जैसे और भी writers है उसमें, we promote their books, writings, poems. We talk about books, we review books. अभी कौन क्या पढ़ रहा है, they can give their feedbacks. We upload their blogs. We do all that. देखो, क्या नाम है आपके ग्रुप का? Ridiculous book club. रिडिकुलस बुक क्लब. Right. और मतलब
मैं भी उस ग्रुप में हूँ, तो मतलब मैं तो यंग नहीं हूँ, मतलब मैंने तो वैसे ज्वाइन कर लिया वो ग्रुप। तो अगर मेरे जैसे सारे बूढ़े लोग उसमें ज्वाइन कर लिए तो फिर तुम्हारा ग्रुप यंग के लिए कैसे रह जाएगा फिर? व्हाट आर यू डूइंग मेक श्योर दैट दैट डजंट हैपन? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि वी आर ओनली मेकिंग इट एक्सक्लूसिव फॉर द यंगस्टर्स। अगर आप लोग भी ज्वाइन करेंगे तो वी कैन रिलेट टू ईच अदर स्टफ, कि मतलब आप लोग का माइंडसेट क्या है, हमारा माइंडसेट क्या है। नहीं, तो लेकिन वो दैट जो पर्पस है वो लॉस्ट नहीं हो जाएगा? अभी तुमने बोला कि माय कोर पर्पस इज दैट यंग पीपल हैव अ प्लेटफॉर्म टू रेज देयर वॉइस। अगर एवरीवन जॉइंस दैट ग्रुप, देन व्हाट इज दैट एक्सक्लूसिविटी इज गॉन, नो? पॉइंट तो है। लेट्स सी, वी हैव नॉट had any old members yet. आप ही हो, that is not too old. 40 is okay with us. I'm not I am not 40 yet. Hope in next year or so. Okay, so tell us what motivated you to make. So I know that, okay, what motivated you to make that group, but what is the outcome you are expecting? कि क्या what is the outcome you are expecting कि मुझे एक ग्रुप मैंने बनाया है, मुझे मुझे ये मिलेगा इस ग्रुप से? Like, is that something like that or no? नहीं, Like, what is मतलब मेरा कोई पर्सनल लेवल अचीवमेंट तो होने नहीं वाला। नहीं, गोल्स क्या है ग्रुप बनाने के? ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? वी नीड टू कलेक्ट लीडर्स एंड राइटर्स। मतलब देयर इज अ राइटर, आई कैन नॉट नेम, मतलब वो ग्रुप में एक राइटर है जिसको पता नहीं था कि हाउ टू पब्लिश अ बुक। शी इज ओनली 16 राइट नाउ एंड शी हैज कंप्लीटेड अ बुक। सो उसका स्क्रिप्ट अभी खत्म हुआ है एंड वी रिव्यूड इट। सो शी chose 3 ARC leaders and with 3 people reviewed it. So now we are going to publish a book. So this is one of the target we set, कि मतलब जिनको नहीं पता कैसे पब्लिश करना है, वी ऑल्सो पब्लिश देयर वर्क। Yeah, yeah. एंड लाइक जैसे कि आपका ब्लॉग था, वी पब्लिश योर ब्लॉग। मतलब आपके पास तो सोर्सेस है, जिसके पास अपना ब्लॉग प्रेजेंट करने का सोर्स नहीं है, लेकिन प्रेजेंट इट एट आवर प्लेटफॉर्म। Right. वी आर जस्ट क्रिएटिंग ए प्लेटफॉर्म टू पब्लिश एंड शोकेस देयर No, टैलेंट। I think, Kaushik, why I'm asking you is this because what you are doing is a very good thing. But I think what you need to also have it clarity in mind कि you know कि what you want. Like for example, तुमने बोला कि हमें young readers के लिए एक platform चाहिए या young readers और writers के लिए एक platform चाहिए. That's a very good objective, brilliant objective. How do you maintain that objective? How do you maintain the sanctity of that objective is one thing which you have to think about. सेकेंड थिंग, तुमने बोला कि जिन लोगों को नहीं पता है पब्लिशिंग के बारे में, भी किसी को नहीं पता है कवर कैसे बनाते हैं, तो आजकल तो मिड जर्नी एआई टूल है, उससे कवर बन जाते हैं। देन किसी को नहीं पता होगा, हो सकता है कि ट्रेलर कैसे बनाते हैं, बुक ट्रेलर्स। तो देन उस बुक ट्रेलर के लिए पीपल कैन हैव द बुक ट्रेलर प्लेटफॉर्म, वहां पे उनको सपोर्ट मिलेगा, पब्लिशिंग के लिए मिलेगा। इनफैक्ट अमेजोन केडीपी पे भी बुक्स पब्लिश हो जाती हैं। तो एंड ऑफ कोर्स मार्केटिंग इज अ बिग थिंग कि हर एक पर्सन के लिए इंडिविजुअल गोल्स है। सो आई थिंक दिस इज वेरी गुड। तो द प्लेटफॉर्म व्हिच यू हैव क्रिएटेड फॉर यंग रीडर्स एंड राइटर्स, आई थिंक इट्स वेरी कमेंडेबल। इट्स वेरी कमेंडेबल बिकॉज यू आर राइट कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको नहीं पता होता है, जिनको नहीं पता होता है कि उनको ये सारे काम कैसे करने हैं। सो और और एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि मैं अभी एक लीडर हूँ पर मेरे आसपास कोई लीडर नहीं है। लाइक मेरे लोकेलिटी में और कोई लीडर है नहीं, तो आई हैव नो वन टू टॉक टू। सो रिलेटेबल लोग भी मिलेंगे आपको एक साथ। correct. Very, very good. Very important. Important. These things are very important. And I mean, I must really congratulate you कि you have started this at this age. I mean, very good, very good. So, थैंक what यू। advice will you give? What advice will you give to a young person like yourself, um, if they want to start on this journey? Like, what advice will you give? कि रुकना नहीं है, और दे शुड नॉट बी स्केर्ड ऑफ द आउटकम। दे शुड नॉट प्री डिसाइड प्रिज्यूम द आउटकम। लेट द फ्लो डिसाइड द आउटकम एंड डू नॉट प्रिज्यूम द आउटकम। जस्ट पुट योर बेस्ट एंड वेट फॉर द आउटकम। जो होगा वो अच्छा ही Okay, होने वाला है इफ यू पुट योर। okay. So you said कि अभी I think you said कि मेरे अभी बोर्ड के months I'll be busy, and also writing club का what is the impact on that? बोर्ड मतलब वो एग्जाम पे? एकदम, हाँ, किस चीज पे? कैन यू रिपीट? राइटिंग पे
Will you continue writing or you'll stop writing for the time being? What will the impact on your group? जो तुमने ridiculous group बनाया है उसके No, I ऊपर क्या still impact होगा? we do still write. मैं मतलब कोलैबोरेट भी कर रहा हूँ राइटर्स के साथ. We collaborate writers. अभी बुक नहीं लिख रहा हूँ cause I have exams, but exams के बाद I will continue writing a book. एक book start किया है, it is midway. और poems we are still writing and publishing on our platforms. तो जो नेक्स्ट बुक है तुम्हारी वो किसके ऊपर है? Is I that cannot reveal, but a fiction or a fiction story? it's a fictional book, but I cannot reveal the details. No, that's fine. I'm not asking for details. I'm asking कि genre कौन सा है? Like Genre, drama है? it's about college life. It's about a group of 4 friends and their life. Okay, उस टाइप का है. okay. So उसका क्या plan है? Will you still go with self-publishing or you look for traditional publishers as well? इस बार तो मुझे एक्चुअली जब मैं पब्लिश किया मुझे ट्रेडिशनल पब्लिशिंग हाउसेस के बारे में ज्यादा पता नहीं था. बट नाउ आई हैव यू पीपल एंड टीसीएस आईटीएम, सो आई विल ट्राई टू कॉन्टैक्ट पब्लिशिंग हाउसेस फर्स्ट. Yeah. And if they agree with my book script, then I will go with them, or else I will choose Notion Press. Okay. I mean, yeah, definitely reach out to me. I can tell you. So I have done, I think 5 books with self-publishing and 1 book with traditional publishing. So मुझे दोनों का ins and out पता है. What are the pros and cons for both of them? So yeah, definitely reach out to me and I can guide you कि क्या है pros and cons, and then you can take your call. Yes, thank you. No worries, no worries. So I think you ran a contest also, no? You ran a contest on your book club and you got some 30. हाँ, एक्चुअली वो अभी भी चल रहा है. The last date is 30th September. So it's the writer of the month contest. We will conduct it every month starting from September. इसी महीना it was the first edition, and we are basically providing 4 topics from out of which you can choose any one and write upon the topic. तो क्या है वो topic? Actually, I do not remember all the 4 topics. One is the smell of the rain, and ऐसे कुछ 4 topics. It is on our Instagram page. Okay, तो कोई अगर तुमको आगे बोले कि भाई मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगा, मुझे बना देना राइटर ऑफ द मंथ, तो No, we do not do that. नहीं. अगर पैसे के लिए करने होता तो we could have monetized the page. मतलब हम लोग अभी तक पैकेजेस निकाल सकते थे. We have a lot of audience. We have got over 20k views in the last 1 month. Okay. So Okay. money is not the matter. Your voice is taking a bit, bhai. Okay, network issue. It's okay. I can hear you now. So you have already written your book, है ना? Show that book again. It's here. So what's it called? The Theory of Life. So अभी ये किताब लिख के it's been like what, 6 months? No, it has only been 2 months. 2 months. क्यों जुलाई में आया था ना? हाँ, जुलाई में आया था. September. Okay. So if you look back, do you think do you want to change something about the book, or no, you're happy with what it is? नहीं, it is perfect right now. But अगर मुझे cover change भी करना है तो I can change it at future. I can change it in the future also. Not cover. मतलब cover can be changed. Not cover. I'm saying कि उसके अंदर लिखा क्या है, content. वो भी चेंज हो सकता है एक्चुअली. सेल्फ पब्लिशिंग का ये एडवांटेज है, आप अभी भी जाके स्क्रिप्ट चेंज कर सकते हो. तो जब नेक्स्ट टाइम आप ऑर्डर करोगे इट विल बी एडिटेड एंड प्रिंटेड. Okay. So print demand है basically, yeah. हाँ. So see, you are quite young, no? You're 17, you're in 12, your whole education is in front of you. You maybe go for MBA, may go for chartered accountant within your commerce area, international management studies. So what is your goal towards your writer journey? Like, do you have you made a goal कि तुमने कोई गोल बनाया कि मुझे ये अचीव करना है राइटर जर्नी में, या फिर ये साइड में चलता रहेगा, मेरा करियर साइड में चलता रहेगा? नहीं, आई वांट इट टू गो हैंड इन हैंड. मतलब मुझे आफ्टर 10 years आई शुड हैव 2 achievements. मतलब मेरे नाम के नीचे 2 चीज होना चाहिए.
For example, if I become a chartered accountant, so chartered accountant slash writer. मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंसी फील्ड में उतना फेमस तो मैं रहूंगा बिकॉज आई पास द एग्जाम, बट राइटिंग फील्ड में भी आई शुड हैव दैट फेम एंड द पब्लिशर्स की राइटर बन चुका है. मतलब इट शुड नॉट बी अ पैसिव सोर्स ऑफ इनकम, इट शुड आल्सो कम इन द एक्टिव सोर्स. ओके, सो उसके उसके क्या क्राइटेरिया है? 10 साल में क्या होना चाहिए? 10 साल में क्या होना चाहिए, आई एम नॉट तो श्योर, बट you told आई me ना शुड 10। नॉट आई शुड नॉट स्टॉप राइटिंग, दैट इज द पॉइंट. लिखना नहीं रुकना है. We ओके should keep writing, and the time will say what is kept in the future. ओके ओके, सो should we do a quick rapid fire round? Okay, let's do it. Yeah, so let's do one thing. I think your friends have joined, a lot of your friends have joined. Maybe people from your group have also joined. So Okay. if you got questions for Koushik, just type the questions in this chat box. And once we finish the rapid fire round, then we'll come back and ask the questions to Koushik. Does it sound okay? Okay. Okay, so here you go. So texting or talking? Texting. Okay, your nickname? Kaushu. Okay, your first celebrity crush? Emma Watson. Okay, favorite junk food? Pani Puri. Mogambo or Voldemort? Voldemort. Do you know who Mogambo is? No, actually I am pretty much into Harry Potter, so मैं पहले ही Voldemort बोल दिया. नहीं, पर मोगैम्बो पता है कौन है? पर ये पता भी नहीं है मोगैम्बो कौन है. Mogambo is the actor from Sholay, I guess. शोले? नहीं नहीं, शोले का नहीं है भाई. You have to go and Google who Mogambo is and see that movie. It's called Mr. India. Okay. I'll do Have it. have you heard of John Wick? नहीं, जॉन विक का एक चैप्टर देखा था and that's it. Okay. एग्जाम्स से. तो Old Balaji और Ullu TV? Old Balaji. Safer, no? Safer choice. हाँ. TV or books? TV or books? Obviously books. Obviously books. Okay, well done, yeah. So how did you find the interview? It's pretty awesome and अच्छा है, interact करते रहना चाहिए with experienced people or senior people so that मतलब we can learn more things. It was pretty awesome. Okay, brilliant, yeah. So guys, if you have any questions, you can type your questions and Koushik will answer. If you don't have any questions, then we can close the interview session. Thanks, Koushik, for your time. And hopefully we'll speak again offline. Yep. Thank you. Thank you. Bye. Bye bye. Have a great day. You too.